बेंच या चेयर स्टूडेंट्स के लिए? Name is Ramir. Nice to meet you, Kautilya. I'm Vayu Pansali. Great. Okay. I'm from 12th Commerce. Hello everybody, my name is Ishita Kumar. I'm from DPS Gandhinagar and I'm in 12th Standard Commerce. Hello everyone, I'm Aniket Shah from Prakash Higher Secondary School. I study in grade 7. Hi everyone, my name is Sanvi. I'm from Prakash and I'm in 8th B. Hello everyone, I'm Zoha Contractor from Cosmos Castle International School and I'm in 10th standard. अब आप सीट ग्रहण कर लीजिए। कौटिल्य, ये जो बच्चे हैं ये आपको प्यार से कौटी बोलना चाहते हैं, चलेगा? कौटी? मेरे ये घर में मेरा यही नाम है। You can ask your mama. It's my nickname. Really. Koti is your nickname. Wow, wow, wow. Great, great. So, I mean, you guys can call him Koti also, right? It's a बहुत प्यारा नाम है. And I believe he's a very sporting guy, a very promising guy, but cute. First, about yourself and your daily routine. Well, my name is Kautilya Pandit. I'm from, I read in GD Goenka World School. I am 11 years old. And about my daily routine, well, so my routine is never fixed, but it is just like whatever, suppose, like I start my daily day, my normal day, and at the time I love to study, I study. The time I love to play, I play. So I'm a moody person, as for myself and also. I go on with my mood, and how's my mood, what is it saying, I'm going as per it, and like if I want to play sport, so I do the work, I do the stuff that I love to do at the time. Thank you. Thank you, Kautilya. Now, can I have Prisha for the next question? Who inspired and encouraged you to be the Google boy? Well, firstly, I don't know that. but still, like, for being the Google boy, it is just a title. Like, I want to be Kautilya Pandit, not Google boy, because this name is given me by others. I want to be personalized. So, well, my idol is Dr. APJ Abdul Kalam, and well, he is my inspiration. Thank you. Great person as an idol. Trisha, for the next question. Hello, Kautilya. I would like to introduce myself. I am Trisha Amarkotia from Prakash Higher Secondary School. Questioning the Google boy is just the same I do with the Google, but the difference is animate and inanimate. I would like to add a personal touch to my question, and here I go. You mentioned in some of the interviews that your dada was your biggest inspiration. What are your childhood memories with him? Well, that's like, well, of course, being my Dadaji, it's one of my best moments in my whole life. And like nowadays also, like whenever we met and whenever we study, so it is a great moment. And also with some like beach mein bhi mere ko daatte bhi hai, marte bhi hai. But the most important is that is love, and like what he tells me every time, what he teaches me. So he's one of the most, he's the most lovable person that I've ever met, and I love him the most. Thank you. Thank you, Kautilya. Kautilya, can you please shift to the sofa? Thank you. Thank you. Now, Mitesh sir, can you please ask a question? खूब खूब आभार रुचि का, और विशेष रूप से धन्यवाद कौटिल्य पंडित कि आज आप यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। गूगल बॉय के नाम से आपको लोग जानते ही है, लेकिन आज एक और नाम पता चल गया कि आप एक डांसिंग बॉय भी है। कि आज लोगों को खूबी के बारे में पता चला कि और आपके पास क्या खूबी है। Well, एक नहीं और सारी, मैं छुपा रुस्तम हूँ, आप बस देख लीजिए। यही तो, अभी तो 10-11 साल की उम्र है, जब 25-30 साल के हो गए तब पता नहीं क्या करोगे। देखिए, आपको देखकर तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं
कि कौटिल्य बैठे हैं, क्या पूछ लिया जाए, क्या पता चल जाए। लेकिन मेरा थोड़ा एक अलग सवाल है कि ऐसा कोई विषय या ऐसा कोई सवाल जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। बहुत सारे हैं जी, एक थोड़ी ना, बहुत सारे हैं। अरे आप गूगल बॉय हो, आपको तो सब पता होना चाहिए। वेल सी, नॉलेज इज एंडलेस। नॉलेज कुछ भी हो सकता है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस ऑडिटोरियम के पीछे वाली गली के पीछे किसका घर है, वो भी तो नॉलेज है। बट दैट आई डोंट नो। और आपको जो साइंस के विषय में जो आपको रुचि है, वो आपको साइंस के प्रति ज़्यादा लगाव क्यों है? Well, because science, of course, is like my favorite field is astrophysics. It's like loving observations and its hypothesis and making it more like just discovering something, just making a research. It is one of the best thing, and it is only the motto for which, because I love research, and due to research only I love science, because if research is there, then you can find and do new things, which is very very creative yet great. धन्यवाद। आपसे सवाल करने के लिए हमारे विद्यार्थीगण ने भी बहुत सारा रिसर्च किया है, तो वो भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। Exciting answer. Next we have Tanishi. Hi, Kautilya. Hello. So, I'm assuming you speak many languages? What? Do you speak many languages? Well, I can speak Haryanvi, if you know. Yeah, I can't know. speak Gujarati. Well, a bit, but I can't speak Gujarati, but I can speak Kemcho. That much I can. Well, that's a good start. So, do you want to learn more languages? Well, yeah. Which one do you want to learn? Well, I'm learning Spanish in school as a third language. And also, like, I know Sanskrit. Well, I've learned a bit Punjabi because I was just staying in Chandigarh for few years. And also, just my favorite languages. And yet, और अभी मेरे को तो गुजराती सीखनी, क्योंकि because अगर आपको ढोकले का मजा लेना है तो आपको गुजराती तो आनी चाहिए ना, वरना मजा नहीं आता। Definitely. That was a very interesting answer. Thank you, Kautilya. Next up we have Trisha. Hi. Hello. So Kautilya, have you ever felt that your knowledge, which is so grateful, has also become a curse instead of a blessing? I shall be grateful if you narrate an incident. Well, of course, everybody is blessed of God. हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, but a creation of a new generation is yet a very very bigger thing than that. So you see, everybody is God gifted, whether in any other field. Well, I've never felt it because, well, what I think for myself is I'm a learner, I'm a starter, and it is miles to go, because, and you must have listened that I have miles to go before I sleep, and there are dark woods. The woods are dark and deep, but there are miles and miles to go before I sleep. Well, so the way is very big, and I'm just a learner. So I never felt that, and I never want to feel that, because I want to learn more and more and new things. Thank you very much. What answer, Kautilya? Next up we have Ishwari. Hello, Kautilya. I wanted to ask, what are your views on the development of India on space and technology? Well, of course, the ISRO is developing very fast, and if you see, like, in such a low budget and is making such, well, the budget अच्छा है, but still, like, किफ़ायती है हमारे ISRO, and in that still it is the best. And if you see, like, the past GSAT-11 Chandrayaan 2 that is yet to be launched, and such great projects with a very less percentage of failures.
So our ISRO is developing very fast, and it will help our nation, the humanity, and everybody in the world very greatly, and it will do a great, and there would be a great leap in the development of space, and it will make a big name of India in the field of space and aeronautics. Thank you. A wise answer at such a young age. Now, can we have Romin for the next question? Well, before he does that, Koti, एक चीज बताओ. See, यहाँ जितने भी students हैं, सब क्लास में पढ़ते हैं, सबके टीचर्स हैं, सबके सिलेबस हैं, सबकी कोचिंग क्लासेस हैं, ट्यूशन में भी जाते हैं, और टीचर्स नेचुरली सब्जेक्ट्स लेते हैं. लेकिन इतना नॉलेज होने के बाद आपके जो टीचर्स हैं उनको आपसे डर लगता है, या आपके टीचर्स आपके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं? Well, it's normal because, of course, teachers know they have a great experience, they have a better point of view. Suppose अगर आपको उनसे वो चीज़ vastly भी पता है, but still they have a great experience and a better point of view, which is much and much more important. So of course it's normal, and of course my teachers indeed, as per me, they're very intelligent and they know much more than me, because I'm just a starter, I'm just a learner, and their point of view for me is very great and very important. Well, that's exactly the answer I was looking for you, and big round of applause. ये एक बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए अपने टीचर्स को हमेशा ये देखना कि मेरे टीचर्स मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, और एक रिस्पेक्ट और नॉलेज मैं कौटिल्या में देख रहा हूँ. वेरी वेल सेड, वेरी वेल डन. Okay, so Kautilya, I would like to ask you that as we all know that you have realized your potential at such a young age. Well, no, see, I've never realized my potential yet. I'm just what I said before also, I'm just a kid, and well, I don't know what's my real potential is. See, like when I was small, very small, I would love to be in IFS, Indian Foreign Services, because and after it, I wanted to become an astronaut, astrophysics, space scientist. So see, well, my ambition changes as per the favorite field, because it can change. The new things that come, suppose there is any other field that is my real potential, and I don't know till now. And if it comes tomorrow, then my ambition will change, and of course my dream will change definitely. Yes, but I want to know that if you had not gained such knowledge, at what position you would have been right now? Well, I think see, Dr. APJ Abdul Kalam sir, well, it is not to be compared with what I'm saying. It is wrong, but still, see, he was somebody like, we can't be compared, because I'm just a learner. He's just like, he has crossed the limits. I'm not even started. So, potential is, it is in everybody. It is in you, it is in me, it is in everybody here. If it is realized, and then if it is nurtured, then of course at any stage, at any point of time, you can boom up in such a big level that you can't even imagine, because it is dependent on the platform, on the stage that you get. See, like I'm getting such a prestigious stage, due to which such a precious stage, due to which I am yet increasing my level of potential, my level of intellectuality, and my level of intelligence is increasing because of the stages, and because of the platform that I've gained. And it is all dependent on the platform that you gain. Thank you. Very well said. Thank you, Kautilya. Now, next up, in audience, please be ready. You'll get a chance to ask questions to Kautilya as well. Next, we have Hitav. Hello, Kautilya. I would like to ask that who do you think is your greatest inspiration or ideal in your life? Well,
I told it before also, Dr. APJ Abdul Kalam sir. Thank you. Prisha, for the next question. Does any one of you know, I want to ask that anybody of you is here, do you know good beatboxing? Because I want to learn. So after it, can you just teach me that? Yeah, question. You'll get a chance. What are the lovely moments of your life other than being called as a Google boy? Well, this is my most loveliest moment as per now. Talking to you, talking with such a beautiful audience is one of my greatest moments. Thank you. Thank you. Thank you, Kautilya. Next, we have Ankur. Hey Koti, this is Ankur of DPS Gandhinagar. Can you just shift to the middle? Yes, thank you. So I am Ankur of DPS Gandhinagar. Nice to see you. And firstly, I would like to tell you that I am a really big fan of your geographical knowledge. And I want to be just as perfect as you are in this field. I'm not perfect. Yeah. See, the knowledge is endless. Knowledge is just like in sea, and you can never collect even a drop of it. You can never, because you can't compare anything with endless. So, well, I just want to learn, that's why it's good. Yeah. So basically, I wanted a tip from you. That we all know that all the different geographical locations are very much on your fingertips. So is there any particular technique that you memorize those all geographical locations? Is there a particular technique? The easiest way that I did it, not only because I didn't even learn locations, I learned many other things like GDP and everything, politics and all. So, well, the easiest way to do it is correlation. If you correlate the things in any field, so still it makes it 90% easier and better to learn you. Thank you. Thank you so much. Oh, well, Kautilya, tell me one thing. आपके fame, recognition, popularity, इसमें आपके parents का क्या योगदान है? What is the contribution of your parents in your fame recognition? Well, वो इतना है जितना, I'll tell you. Great question. जितना अर्जुन को बनाने के लिए द्रोणाचार्य में था. वाह, वेरी गुड. सोच के जवाब दिया, बहुत इमोशनल और बहुत गहरा जवाब कौटिल्य ने दिया. आपका आजकल पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स टेंशन रहते हैं, रैंकिंग्स में होड़ में रहते हैं, रेस में रहते हैं, और थोड़ा बच्चे भी प्रेशर में रहते हैं, तो पेरेंट्स के लिए आपको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? एनी मैसेज टू द पेरेंट्स फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ पेरेंट? Make a case in court to ban PUBG. You'll gain 30% more results. It would be better. And और अगर किसका कोई oppose करे तो मैं उससे बात करूंगा और आपकी साइड लूंगा. जी. Wow, great. So, audience में कोई questions, कोई parents, teachers, any question for Kautilya? Just raise your hands and somebody would be there with the mic. आप में से कोई Kautilya से कोई question? Teachers में से या parents में से? जैसे कि आप मोदी जी के अच्छे दिनों को देखते हो. Well, it means the right of a person, its constitution, the development, everything, if it is developing in a state in which is the level of
the living standard of a person, and most important, the happiness level, the index of happiness level. If it increases, then it means अच्छे दिन आ गए. See, like India, अगर मैं अभी निकला था, हर साल निकलते हैं, the level of happiness index, उसके अंदर Sweden is in the top, India is after 140th rank. No, it's 140 plus. And in the happiness level index, and Pakistan is in 70s. So it is like a very big difference. Even the people of Pakistan, they're more happier than us. But हमारी economy उनसे बड़ी है. USA is still, वो भी USA also वो happiness के level के index पे हमसे भी पीछे हैं. क्योंकि happiness level index, it is not dependent on how successful you are. It is dependent on your ambitions, on your desires. If क्योंकि desires there, as per every country, they're different. So if they're true, then of course, see, stress, if we counter it, अगर a person वो खुद से with the government अगर वो खुश है, it means that अच्छे दिन आ गए हैं. Okay, so any more questions from you guys sitting there? We have next question from Sanvi. If you were to write an autobiography, what would the title be and why? Till now मैं autobiography नहीं, अभी तो मैं किसी और की biography लिखना चाहूँगा. Well, autobiography writing because 11 years में 2 पेज ही बनेंगे autobiography के. Well, later में वो later तो देखेंगे, अभी थोड़ी ना देख सकते हैं. Well, the title would be Hi, I'm Kautilya. See, it's a good title. It's a very sweet title. Well, no. See, autobiography का मतलब ही तो यही होता है. Autobiography is for delivering that your personally. So जो पहली चीज यही तो होनी चाहिए. Hi, आप कौन हैं? तो बता देंगे. Hi, I'm Kautilya. See, it's correct. Thank you. You're welcome. So Kautilya, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेस आया when you thought, oh, I just want to give up, अब मुझसे नहीं हो रहा, because trust me, मुझे तो रोज ऐसा ही होता है. Just tell me, how did you tackle it? Well, the most difficult phase of my life till now is जब मम्मी जी डंडे मारती है तब उनसे बचना it's very difficult. And for facing it also, at the time facing mama is very difficult. So it is, till now it is one of my most horrible moment of life. तो आप ये कह रहे हैं कि आपको मम्मी डंडे मारती है. Actually डंडे मारती है? थप्पड़ बहुत मारती है, डंडे भी कभी-कभी. अच्छा, थप्पड़ मारती है? मम्मा डंडे नहीं, मम्मा बेलन और वाइपर से पीटती है, डंडे नहीं. तो बेलन किसके लिए खरीदा उन्होंने? आपके लिए, पापा के लिए? नहीं, पापा जी, well, अभी तक पापा जी का तो नहीं आया नंबर, अभी तक मेरा ही आया. अच्छा, ओके. सो मम्मी एक बात बताओ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही और एक्नॉलेज किया कि आपको थप्पड़ पड़ते हैं. कई आरटीई में कई जगह स्कूल्स में अगर टीचर थप्पड़ मारते हैं तो उन पे केस हो जाता है, ठीक है, या पेरेंट्स उनको कटघरे में खड़ा कर देते हैं. लेकिन हमारे पेरेंट्स तो ऐसे कि इसको और ठोको, और ठोको, और ठोको, अगर ये नहीं पड़ेगा तो और ठोको. अब सवाल ये है कि अगर पेरेंट्स ठोक सकते हैं तो टीचर्स क्यों नहीं? Well, जैसे if you see कि जैसे if you compare, अगर आप 10 साल या 20 साल पहले जाते हो तो the face was totally different. जैसे हमारे पापा जी कहते हैं, मम्मा कहते हैं कि like हमको टीचर इतना मारते थे, still a level it is very good because making it in a control. But as per me, जो एक बच्चे का thought है उसको नहीं मारना चाहिए. बहुत दर्द होता है. दर्द तो होता है, लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता. It's for your betterment. क्या? Maybe it's for your betterment. Well, yes. No, on a serious note. But betterment के लिए तो होगा. लेकिन अगर आप 30 या 40 रुपए का बाम खरीदते हो उसको ठीक करने के लिए, तो उससे घर की इकोनॉमी को भी तो थोड़ा नुकसान होगा. नहीं, on a serious note, Kautilya, I note from you as a kid
कि अगर आपको स्कूल में टीचर, आई डोंट नो आपको मार पड़ी है कभी या नहीं पड़ी है, लेकिन आपका क्या व्यू है अगर स्कूल में टीचर एक थप्पड़ मारती है तो क्या उसको इशू बनाना चाहिए, क्योंकि मम्मी भी तो घर पे मारती है? Well, On a serious note. Well, it should not be issue because pehle at most of the cases, in every case, the first जो पहले एक बच्चे की problem, बच्चे he makes a rakus or in masakri, well not masakri, well he makes the problem. That's why only teacher reacts to it, because and reacting to it is very important. Yes. A big round of applause for Kautilya for this answer. And there's a message that अगर घर में मम्मी और ठोको करती है तो स्कूल में अगर टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया तो it should not be big issue. लेकिन फिर अगर मम्मी और ठोक करती है ना तो टीचर से थप्पड़ भी नहीं पड़े था, क्योंकि फिर डर हो जाता है टीचर से भी, क्योंकि and that डर is very important, and if you're feared of it then it means that you are something and there is still a hope to increase. Yes, he has a point there. In short, अगर घर में मार पड़ सकती है तो स्कूल में अगर मार पड़ेगी घर पे तो स्कूल में मार खाने की नौबत ही नहीं आएगी. In nutshell, कि अगर it should not be created an issue. Is that what he says? As a child who goes to the school and he has ample respect for his teachers. Questions, carry on. Thank you. Now with this last personal question, Kautilya, brace yourself for the scientific questions. We'll take 2-3 more, not last. This is a personal question. You'll have more of scientific questions. Don't worry. You can have any question. We'll ask you. Next, Vayu, can we have a personal question? You have gained so much knowledge in a pretty small age. So maybe you study little more or not. So how do you take co-curricular activities in your life? Well, it's very important. और अगर आप मम्मी से पूछते तो वही तो कहेंगी कि पढ़ता ही नहीं है, ये तो बस खेलता ही रहता है, टीवी देखता है. Well, so of course, as per of course, co-curricular activities are very important, and due to them, you gain lots of different sort of knowledge and attempt, and due to which your level of your intelligence and the moment in your point of view, it increases by a great, it booms up, it bounces back and it goes on such a stage which you can't achieve by just studying, and because your co-curricular activities are as much as important as your academics and your other personal beliefs. क्या आपको अपनी मम्मी ऐसे खेलने देती है? मतलब बाहर जाओ खेलो या फिर पढ़ाई? Well, मम्मा पापा बस कहते हैं, लेकिन मतलब जब ज्यादा हो जाते तब मम्मी रोकती है, गेट ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाती है, जब मम्मी का ध्यान हटता है तो मैं भाग जाता हूँ. Nice. Thank you. Kautilya, so my question to you is, you have come from a small town to this famous personality, so you must have faced some hardships in your life. अभी तक तो नहीं, आशा करता हूँ बाद में भी नहीं आए. Okay. Thank you. So now can we start with more of the GK and scientific questions here? We have Ishwari next. You said geography is your favorite subject. So why now it's astrophysics. So why do you think astrophysics is your favorite subject? Because it is for me, it's very क्योंकि आपका वही favorite subject होता है जिसके अंदर आपको जानना पसंद है. Well, see, because it is yet to be explored. आपको there are lots of question marks. ऐसे बहुत सारे unanswered questions हैं, ऐसी queries हैं जिनको आप solve करना चाहोगे. So well, that's why, because there are lots of unanswered questions and there's lots of hopes of research, that's why I love astrophysics. Can you introduce astrophysics to our audience? Okay. Astrophysics is observing and making the
in the space and why is it happening and telling it. So it is astrophysics mainly depends on the science behind everything that happens in space. Thank you. Thank you. Thank you. Now, Mitesh sir, can I'll tell I you. have a question from you? Well, so Vayu is a question. I'll just answer it before it. Your name is Vayu only, no? What is your name? Vayu, yeah. So here's a question that about teleportation or not. So well, of course that can happen because if you see, like few years ago, no, just 1 year ago, there was an experiment where the photon it just went from one place and it attached to a different one. So well, if that can happen, then of course teleportation can happen. और अगर ये अभी तक prove नहीं हो पाता, हो गया, लेकिन अगर ये prove नहीं हो पाता, still there is something in science which is known as hope. New research, new observations brings us a thing which is called hope. So still, every point of time in science, there is a thing known as hope. So well, there is still, and before also there was a hope, and may it comes true about teleportation. बिल्कुल, सवाल तो बहुत सारे हैं क्योंकि आप गूगल बॉय है तो सवाल तो बहुत सारे सामने आते हैं, लेकिन बाद में ये सोचा कि आपकी जिस विषय में रुचि है क्यों ना उससे रिलेटेड ही सवाल किए जाए। प्लूटो करके ग्रह है जो हमारी ग्रह की श्रेणी में आखिरी नंबर पे आता है। क्या आपको पता है? 8वें नहीं 9वें। हाँ, मतलब आखिरी नंबर, मैं 8वें नहीं बोला, आखिरी बोला। जो आखिरी नंबर पे आता है वो क्या अभी भी है, माना जाता है या फिर उसको निकाल दिया गया है? 24th August 2006 उसको हटा दिया गया था because it went in the Trans-Neptunian region. The Trans-Neptunian region is the region after the orbit of Neptune और इसको वो cross करता था. That's why it is said that it didn't had a gravitational control and a proper orbiting velocity and a proper orbiting period and a proper orbital path around the sun. That's why it is said Pluto is usko it went and it was departed from the list of planets on 24th August 2006. बहुत खूब, इस जवाब के लिए तालियां बजाइए क्योंकि जवाब सिर्फ इतना चाहिए था कि प्लूटो को हटा दिया गया है कि नहीं हटा दिया गया है, लेकिन उन्होंने पूरी माहिती दे दी कि क्यों हटा दिया गया है। ये खूबी होनी चाहिए। धन्यवाद। कॉटी, आपको किस तरह के सपने आते हैं? जब आप सोते हो तो किस प्रकार के सपने आते हैं? What do you dream about? देखिए, ये डिपेंड करता है। जैसे आज रात मेरे को अच्छे सपने आएंगे, लेकिन जिस दिन मेरे को मम्मी मारती है उस दिन मेरे को नाइटमेयर आते हैं। नहीं, ये तो बात अलग है, लेकिन I just want to know कि जो It is dependent on how is your day and normally it comes good only. Good. यमराज तो मेरी कभी सपने में नहीं आए हैं, इसलिए अभी तक अच्छे हैं। Okay. अब ये बताओ कि what do you dream about in the sense कि आपका सपना क्या है? What is your dream in life? Well, my dream is to be an astrophysicist and to gain new and more knowledge. अभी तो आपने बोला you want to be an IFS officer. वो मैं पहले बनना चाहता था। अच्छा, When I अभी was 5 years old. Sorry? When I was 5 years old at that अच्छा, time. अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 8th में है। तो जब तक 12th में आएंगे तो फिर हो सकता है कुछ चेंज बन जाए? because it is क्योंकि जितनी नई चीजें आप देखते हैं, you face it. Right. Of course, dream changes as per that. Okay. तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन में एक आपकी बार इस क्वेश्चन से पहले प्लीज आप मेरे को बता दीजिए कि यहाँ ढोकला अच्छा किस दुकान पे मिलता है? ढोकला, आपको ढोकला खाना है? देखिए, ढोकला खमन, ये आपको खमन खाना है या ढोकला खाना है? कह दे तो खमन ढोकला, इसलिए दोनों खा लेंगे। अगर जो भी, जैसे अगर आप ढोकला लेते हो, अगर खमन फ्री में आते तो खा लेंगे। अच्छा, ओके, आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपकी ममा से पूछना चाहूंगा। मैडम, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि आप क्या चाहती हैं कौटिल्या बड़ा हो करके क्या बने? ये नहीं बताइए, सिर्फ एक आंसर मैं आपसे नहीं चाहूंगा कि वो जो चाहे। आप क्या चाहती हैं? वो तो जो चाहेगा वही बनेगा, ऑब्वियसली आप उसको करेंगे, लेकिन आप जब ये एक मिनट, इसमें आपको आंसर नहीं देना है, आपकी मम्मी को आंसर देना है। ये मम्मा ने ये सवाल मम्मा से बहुत बार पूछा गया और मम्मी ने एक ही आंसर दी है, एंड दैट इज एक अच्छा इंसान।
वो आपको नहीं देना है, अच्छे इंसान तो आप हो। मैंने आपसे इतनी चीजें पूछी और मेरे को आइडिया आ गया, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। But still, I'm a mysterious man. You can't. You may be a आप mysterious- मेरा आउटलुक देख के मेरे को नहीं बता सकते। नहीं, मैंने आपका आउटलुक नहीं, मैंने आपसे बातचीत करके आपका। Because I love blood. सॉरी, I love blood. यू लव Blood. ब्लड, खून खून पसंद है। सबको, हमको खून पसंद है। अगर हमें खून, मेरा खून नहीं होगा तो मेरे में जान भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपकी मम्मी से जरूर पूछूंगा। यही बात, सबसे पहले अच्छा इंसान बनेगा तब सारे काम अच्छे हो जाएंगे। अच्छा इंसान तो वो बन चुका है, अच्छा इंसान वो है। और अच्छा इंसान इंसान, भी अच्छा बच्चा हूँ, इंसान नहीं। इंसान तो बच्चे थोड़े भी कई इंसान होते सालों हैं के बेटा, बाद बनूंगा। बच्चे भी इंसान होते हैं। अभी इसने बहुत कुछ करना है, मेहनत करेगा तो ये बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं मेहनत करेगा तो ऐसे रह जाएगा। बन तो चुका है, मतलब एक फेम तो ले लिया है इसने। अभी तो बच्चा है, फेम से कुछ नहीं होता, इसने रियलिटी में करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो ये बात तो सही है, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लेट मी टेल यू, मेरी तरफ से मैं आपसे जितना भी मिला हूं, जितना भी मैंने आपसे इंटरेक्शन किया है, मेरे को आप बहुत पसंद आए हो। और यू आर अ वेरी हम्बल चाइल्ड। इतनी उम्र में इतना फेम और सक्सेस डाइजेस्ट करना और एक हम्बल रहना, ऑन द ग्राउंडेड रहना एक बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे नजर में आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो और बहुत अच्छे इंसान हो। जोरदार तालियां कौटिल्या के लिए। From the audience, if anyone wants to ask him questions. Yeah. Yeah. Hi, Kautilya. See, as a kids, we have seen that lot of, kids, nowadays they are spending a huge amount of time on mobile. So I personally wish, how much time do you spend on, playing games or watching movies on that? Personally, well, of course, as a kid, मेरे को मोबाइल करना पसंद है, लेकिन मेरे मम्मा पापा मेरे को देखने नहीं देते, so it's 0 time. लेकिन अगर किसी का भी मोबाइल मेरे को फंस जाता है तो मैं तभी काम कर देता हूँ। Well, I don't like PUBG and all. I don't like Free Fire. I don't like Fortnite. Yet, I like WCC too. Very mysterious. और कोई सवाल? Hi Kautilya, I'm Vinny. Can I ask a political view on one question? According to our government, our economy is declining. So what do you expect on our repo rate on the coming years, according to you? See, our economy rate is yet increasing, but जो उसका rate के growth का decrease हुआ है, very slow, well, it's very that's slow. due to, see, if you talk about, so well, that's also very, it's a bad news for India and also for its economy and for its later uses. And for that, well, we can't blame anybody because... No, I'm asking your view. If you could do something about it, what would you do if you were in the place? Yeah, you. So, like, I would love to for making the investors come in the country, and I would love to make more foreign investor invest, for more the foreign companies to invest in India. And if they do it, of course, the economy of India will increase so much. So do you believe our Indian traders are better compared to foreign traders, or do you believe we should promote our Indian production more than foreign trade? Well, of course, we have to make in India, and of course, we have to make more and more stuff in India, and that would be great for its economy, for its GDP, and for its growth of the overall growth is dependent on finance. So of course, for overall growth of the country, it is very important. डीजे वाले बाबू थोड़ी माइक की आवाज बढ़ा दो। डीजे वाले बाबू आवाज बढ़ा दो भैया। One question I would like to ask. हेलो भैया थोड़ी आवाज बढ़ा। हेलो ठीक है। हाँ Kautilya, God bless you. I would like to ask you one question. बेटा आप इतनी कम उम्र में जब
बच्चे बुक खोलना ABCD या कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं, you learn so many things. Just I was just listening the way the language what you say, lots of blessings from we all. Now आप आपकी उम्र के बच्चे या कुछ बड़े बच्चे को कौटिल्य पंडित बनने जैसा या बनना हो तो आप क्या एडवाइस देंगे या कुछ सलाह देंगे? उनको कौटिल्य पंडित या मेरे जैसा नहीं, उनको मेरे से अच्छा बनना चाहिए. That's what I want, because in that would be good for the country, for the nation, for me, for everybody, that they have to make their name and much bigger than me, and that's what I accept. Great answer. God bless you. बेटा बहुत आगे जाओ, इंडिया का नाम रोशन करो, सारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. Thanks a lot. कौटिल्य, उम्र तो छोटी है आपकी, लेकिन फिर भी लुकिंग एट योर दिस थिंग, आई वुड गिव दिस टू यू कि आप थोड़ा पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं? Of course, I love politics. ओके, तो अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, राइट? और उनके सामने ऐसा बताया जा रहा है कि श्री राहुल गांधी जी एक विकल्प हैं जो अपोजिशन ने रखा है. तो मुझे आप नो कमेंट्स. नहीं, मैं आगे पीछे से मामा से साइन आ गए, नो आंसर्स. सॉरी, नहीं, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ. मुझे पता है मुझे नहीं पूछना चाहिए. नहीं, मैं वैसे बता दूंगा अगर मम्मी ना हो. मैं वैसे आपको पर्सनली बता दूंगा. मैं आपसे सिर्फ, मैं दोनों के लिए पूछूंगा, राहुल गांधी जी के लिए मीडिया वाले ना इसको फैला देंगे. नहीं फैलाएंगे. मैं मीडिया, ये मीडिया ही है. स्कूल पोस्ट इज अ मीडिया. सो आप बिलीव, आप देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे. छापना मत अब. नहीं अखबार में इसको. आप ये बताइए मोदी जी की 5 खूबियां और फिर राहुल गांधी जी की 5 खूबियां. मोदी जी की इसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना. हाँ, वेल वे बहुत कर्मठ हैं फॉर द इलेक्शंस, एंड वो अपना पूरा वो अपनी पूरी जान झोंक देते हैं. एंड ऑफ कोर्स फॉर द and also he is a great he knows how to convince people in his speeches. He's a great speaker. और उनको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कपड़े डालते हैं. पठानी बहुत अच्छे कुर्ते पजामे, सॉरी, ये बहुत अच्छे डालते हैं. और वेल he is a very good prime minister till now. Till now कि अभी तो 5 साल हो गए अब. And he is a great man. ओके, 5 खूबियां राहुल गांधी जी की. He is indeed, as per me, that he's a young blood and a young source. So if he comes, it would be very good for the country, because he's young, तो इसलिए वो खूबी है, या I'm asking is 5 good points राहुल गांधी as it is हैं. सोचना पड़ रहा है. नहीं ऐसा नहीं है. हाँ, नहीं सब में होती है, आप में भी है, मेरे में भी है. मैं अपनी गिनवाऊं? चलो, मेरे को पता है अपनी बता. हाँ, अपनी बिल्कुल योर व्यूज. अपनी बता, नहीं मैं अपनी बताता हूँ खूबियाँ. नहीं आप क्वेश्चन क्यों, आप राहुल गांधी पे बताइए खूबियाँ. देखिए ये भी एक पॉलिटिशियन से कम नहीं है. ये मतलब इसने मीडिया इतना इंटरैक्ट किया हुआ है, बात को कहीं का कहीं ले जा रहे हैं साहब. हमें तो राहुल गांधी, आपने मोदी जी की बता दी. ओके, टेकन. राहुल गांधी की बताइए. ओके, तो वैसे राहुल गांधी जी बहुत ही सीधे इंसान है, बहुत सीधे. तो मोदी जी टेढ़े हैं क्या? मोदी जी टेढ़े हैं? मोदी जी इज क्लेवर. मोदी जी बहुत क्लेवर है. वे राहुल गांधी इज नॉट क्लेवर. राहुल गांधी जी क्लेवर हैं, लेकिन वो बहुत, मतलब जो सीधे इंसान होते हैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए. ओके, सो ही इज नॉट गुड फॉर पॉलिटिक्स. नो, ही इज नॉट गुड फॉर पॉलिटिशियन. ही इज अ गुड पॉलिटिशियन. वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है. ये मैंने कब कहा अंकल जी, ये हिसाब मत कहो. अच्छा, ये मैंने कब कहा कि पॉलिटिक्स के लिए नहीं है. मैंने कहा वो बहुत सीधे इंसान है. मैंने ये कहा कि वो बहुत सीधे इंसान है. ओके, सेकंड, पॉलिटिक्स में है नहीं है, वो हो सकता है, वो तो कोई भी हो सकता है. सेकंड, ओके, तो वे
ही इज वेरी गुड वे, बहुत अच्छे टंग ट्विस्टर है. टंग ट्विस्टर हैं? टंग ट्विस्टर. आप थोड़ा इलेबोरेट करेंगे इस पे? नहीं नहीं नहीं, मैं तीसरी बताता हूँ. टंग ट्विस्टर हैं तो वो सीधे कैसे हो सकते हैं? क्यों टंग ट्विस्टर होना चाहिए? चलो पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला बोल के दिखाइए आप. सॉरी, बोल के दिखाइए. मैं टंग ट्विस्टर नहीं हूँ. होना चाहिए ना. इट इज गुड फॉर द वोकल स्किल्स. ओके ओके, प्लीज कैरी ऑन. ओके, तो चलिए, मुझे समझ आ गया. मैं आपको ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता. राहुल गांधी की 5 खूबियां पूछ के. So let's carry on with the. ये गलत बात है अंकल जी, ये गलत बात है. उनके अंदर खूबियां है, मैं बताऊंगा. हाँ, लेकिन बाद में बताऊंगा. बाद में बताओगे? ओके, ये शांति से खानगी में बताएंगे, प्राइवेट में. चलिए, लेट्स कैरी ऑन. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट. Next up we have Ansh. हेलो. एक्चुअली आई थिंक मेरा क्वेश्चन आपके साथ आपकी मदर के लिए भी है कि दो यू आर दिस मच जीनियस, तो बिकॉज आई एम वर्किंग विथ साइंटिफिक गर्भ संस्कार, तो क्या उन्होंने कुछ स्पेसिफिक किया था ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी? मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं तो That's why I told you अगर सपोज जैसे मैंने कभी वैसे मतलब यहाँ बहुत सारी स्टॉल्स है, बुरा मत मानना अंकल जी अगर होंगे, मैंने कभी भी डाइपर्स नहीं डाले. कभी भी नहीं. वेरी नाइस. Excuse me, कभी भी नहीं. Ma'am, we request you, it's for the student reporters, so Yes, for that's asking it. these types of That's it. questions, you might rather ask him personally. Okay, fine. Thank you. Ansh, कौटिल्य सीधा तो नहीं है? मैंने कब कहा कि मैं सीधा हूँ? हाँ, यस यस, गुड. I told you, आप मेरा आउटलुक लेके मेरे को पूरा नहीं बता सकते. So Kautilya, as you said that you are interested in astrophysicist, right? So can you tell anything about Oumuamua? Oumuamua what? Oumuamua. 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 Yes. Oumuamua. 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 New. I don't know. Okay. No. That's good. Oumuamua. यहाँ हमको Tell me. चाइनीज. आप बता दीजिए Oumuamua के बारे में. Is there anything like Oumuamua? Thank you. I'll search on it. Oumuamua. Okay. Anybody else in the audience? We'll first have to, I think, wind up the. And like anybody like इसके बाद I would love to go to Science City. So just anybody who can tell me that it's good and anybody who wants to move they can. We'll definitely let you know. Now, may I myself ask a question to you? Yes. After giving such wise answers, what do you mean by creativity yourself? Well, creativity is carving out something. See, from a puzzle, you can make up something. You can carve out from anything. I can carve out from anybody here. I can carve out something. So, making something, जो आप अंदर से एक छुपी हुई चीज को अगर आप बाहर निकालते, so that's creativity. Just that is. So, what do you think creativity comes out by? किस तरीके से creativity comes बाहर out आएगी? by imagination. If you imagine something, if you are a good imaginator, then of course you are creative. And imagining new things, of course, is a great piece of creativity. So, creativity खाली imagining new things और खाली नई चीजों के लिए होती है? See, imagination को आप इतना छोटा, imagination खाली नहीं है. Imagination is not a small खाली word, नहीं I है. agree. Imagination is something due to on which the world is balanced. Everything, हर
हर invention, हर चीज is dependent on imagination. True that. See, imagination बस नहीं है. Imagination बस है. Imagination बस नहीं है. Imagination is something which is very big. Imagination is not just few letters. So, for me, it is imagining something and something that carves out. क्योंकि क्योंकि एक चीज में से from just even a single piece of paper आप बहुत कुछ carve out कर सकते हैं, बहुत कुछ. So give me an example जहाँ पे आप अपनी daily life में कोई creative काम करें. एक example जो daily routine में आपका हो जाता है. Yes, मतलब that मैं हर बच्चे के लिए, for everybody I consulted. It is very important कि मैं अपने daily routine में 10 से 20 मिनट या 5 मिनट भी बहुत हैं, मैं अपने आप को देता हूँ. उसके अंदर मैं कुछ नहीं करता. I am free minded. I just imagine. मैं जैसे मैंने बहुत सारी नई thoughts दिए हैं about astrophysics, also about the teleportation मैंने दिए हैं. So just give time for yourself and just imagine anything you want. Whether it is anything, just imagine. If you imagine, everything comes out of it. Thank you. Well, here I fully endorse Kautilya that without imagination you can't be creative. Am I correct, Kautilya? Yes. For to be creative, it is important to imagine. And yes, when he says imagination is a big thing to carve out anything, yes, it is. Well, I would request ma'am out here, she would love to ask you a question. Thank you, sir. Hello, Kautilya. How are you? Fine. I have a question. At very young age, you are facing so much of fame. So, how is your friendship and social life? Well, that's of course. My friendship and my social life is, see, जैसे मैं आज से इतने लोगों से मिला. So there's a new friendship and a social life creating. So see, like most of the people ask me that how do you manage all the stuff? Yes, exactly. So How do you manage? it's easy. Suppose my daily routine, अगर मैं suppose यहाँ आया हूँ, तो यहाँ से मैं बहुत सारे नया knowledge लेके जाऊँगा. Coming to a new place, indeed, it gives you a great level of knowledge. It gives you a lot. It is because अगर आप normally एक जगह पे रहते हैं, if you study in normal daily routine, like अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आप इतना नहीं learn कर सकते जितना आप tour पे आते हैं. So of course, आपका question क्या था वैसे? How do you manage your friends? Yes. Social life. Well, so I take it as first priority, and it's normal. See, मेरे नए friend बन गए like Ansh, and he's also my new friend. So, well, the new friends creating, so it's normal. It's like, well, it's like amazing. Yes. Good. Thank you. Well, I think here we'll wind up the. It was like a jalebi that I answered, but still, please, मेरे को इसको खुद समझ में नहीं आया, लेकिन आप खुद सोच के इसको बना लेना. So. Yes. Okay. It was lovely, amazing, and awesome talking to you, Kautilya. And Excuse me, sir. ma'am, please a quick question, because this is going to be the last question. Kautilya, how do you feel right now? So many questions are asked to you. And at that time, what are you feeling? कोई politics में पूछ रहा है. Answering questions, answering such sort of questions is greatly. It is very like, you feel very good. अगर आप ऐसे questions को सोचते हो, answer करते हो, तो it is even a challenge and I love it. For do you answering have any such idea questions. how questions, which type of questions would be asked to you, and how do you feel? I don't care about that. You don't care about it. Yes. Thank you.
Now that we have coming to the end of this session, may I please ask Cordelia to take picture with the reporters? Sure. And before that, just give a big round of applause for our MC, both of the MCs, and also for the young reporters. मेरे तो सभी बड़े ही हैं, but still, इन बच्चों के लिए, just give a big round of applause. Thank you. You can say हम बच्चों के लिए big round of applause. Yes. All right? Yeah, also to you, obviously. मैंने इतनी देर बोला है, मेरा गला भी, मतलब मैंने अपनी इतनी देर मेरा गला काम किया, तो थोड़ी तो please. Yes, applause बनती है, जोरदार applause कॉटी के लिए. And I hope you enjoyed this session as much as we did. आपको मजा आया होगा अलग-अलग questions. और मेरे ख्याल में शायद हमारी कोशिश ये रही होगी कि आपने इतने जगह क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगे, यहाँ के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट लगे, राइट? थैंक यू सो मच Kati for being a part of this interview. May I please call upon Ansh and Mitesh with their reporters? चलो बेटा selfie let's have a selfie, yeah? So I'm calling them up. Yes. Please, all the students, the reporters, please have a selfie and a photograph and whatever. And you guys from DPS and Prakash, did you enjoy every moment of it? Okay. And even Cosmos Castle. Well, it's a good name, Cosmos Castle. Good name of the school. I appreciate it. Thank you, Cordelia, for patiently answering so many questions. It has been a wonderful time, and thank you to the audience as well for participating so enthusiastically. Please have a big round of applause for yourselves and Cordelia as well. I would request our associates to please do away with the sofas. Sofas को please हटा लीजिए. और आप सब लोग एक सेंटर में आ जाएंगे. Photographers, please manage.